नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव अड्डा के एक बहुत ही अलग, बहुत ही स्पेशल एपिसोड में। इसमें हम बात करेंगे एक ऐसी गाड़ी की जिसका रिश्ता हम सभी के बचपन से रहा है। एक ऐसे सपने की जो बहुत सारे कार एंथुजियास्ट का वैसे भी रहता है कि वो जो बचपन में जो कारें या जिन कारों को प्यार करते हैं वो खिलौना उनके पास रहे। और सोचिए कि वही खिलौना दुनिया भर में आपके नाम से जानी जाए, अगर या आपके पसंद की गाड़ी का जो डिजाइन है वो दुनिया भर में बच्चे उस डिजाइन के साथ खेलें तो कितना कूल होगा। तो यही एक ऐसा कॉन्टेस्ट है जिसमें बहुत ही, आई वुड से, वाइल्ड सी एंट्री हुई है, बहुत ही सरप्राइजिंग सी एंट्री हुई है। और ऐसी एंट्री हुई जिनका कोई ऐसा टिपिकल रिश्ता हम अगर देखें तो नहीं था इस हॉट व्हील्स की दुनिया से, छोटी गाड़ियों की दुनिया से। और वो एंट्री है आरुषि गर्ग, जिन्हें हम स्नैजी मॉम के तौर पर भी सोशल मीडिया में देखते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आज हम टाइम्स ड्राइव अड्डा में लेकर आए हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आरुषि, हमारे साथ आप जुड़ी हैं। पहली चीज तो हमारे जो दोस्त हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ये बताइए कि कहानी शुरू कहाँ से हुई है, क्योंकि उन्हें हम छोटी सी झलकी देंगे कि दरअसल बैकग्राउंड है क्या, और उसके बाद आप ये बताएं कि कहानी शुरू कहाँ से हुई आप। जी, टोटली। सबसे पहले मैं एक क्रिएटर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा नाम है thesnazzymom एंड मैं 6-7 साल से उस पे कंटेंट बनाती आ रही हूँ। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आई स्टार्टेड इट वाज आई एम एन इमिग्रेंट मॉम। तो मैं इंडिया से ऑलमोस्ट 13 ईयर्स पहले यूएस आई और फिर यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ मैं रह रही हूँ 13 साल से ह्यूस्टन टेक्सास में। एंड मेरा बेटा है 7 साल का। एंड व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट आई वांटेड अ कम्युनिटी। जो कहते हैं आप इतने देश से बाहर आते हो, पेरेंट्स सारे इंडिया में, मेरी मॉम राजस्थान में, मेरे इन लॉज गाजियाबाद में। एंड सो वी वर लाइक वेरी लाइक separated from family, and I started my blog and my Instagram and started posting content. And I think इन 6-7 सालों में आप एक relatable figure हो जाते हो, आप moms आपको पहचानने लगती हैं, and you start making a community. And I think ये आजकल a lot of casting agents are looking familiar people and जिनके पास कुछ experience है। And I think that's how they found me. Honestly, I still don't know exactly उन्होंने मेरे को कैसे ढूंढा, but I do understand it that the Instagram page played a big role. और वहां पे जब आपको चुना गया, देन व्हाट हैपेंड, आपसे क्या कहा गया? क्योंकि जो मारुति वैन की स्टोरी है अपने आप में बहुत ही यूनिक है, और ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। व्हाई यू नो चोज मारुति वैन? तो जो सिलेक्शन हुआ या जब आपको शॉर्टलिस्ट किया गया, उस वक्त के बाद से क्या कॉन्वर्सेशन हुआ, एंड व्हाई डिड यू चूज मारुति वैन? जी, सबसे पहले मेरे को कास्टिंग एजेंट ने जब कांटेक्ट किया, पहले मुझे लगा, आई जस्ट डिडंट रियलाइज इज दिस ट्रू, ये मुझे क्यों कांटेक्ट करे। इट वाज कंप्लीटली अनबिलीवेबल। बट वंस वी स्टार्टेड इनटू द कन्वर्सेशन, दे इंट्रोड्यूस्ड मी कि ये शो है, शो का नाम है हॉट व्हील्स अल्टीमेट चैलेंज। और इस शो के लिए हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसी स्टोरी विच इज यूनिक, विच इज डिफरेंट। सो कैन यू टेल अस एनी रिलेशनशिप विद कार्स? दैट वाज लाइक देयर फर्स्ट क्वेश्चन। आप कोई एक गाड़ी के बारे में बताइए। एंड वाज लाइक एन impromptu essay, like that I had to just start speaking. And I started off, and the first car I could think of is my family car, हमारी मारुति वैन। बॉम्बे में मेरे पेरेंट्स बॉम्बे में थे जब हमने अपनी फर्स्ट गाड़ी ली थी। इट वाज अ वेरी बिस्किटी कलर मारुति वैन। इट वाज the best car, the most amazing car. Of course, I made so many memories with my late father, and it was very special. That time is very special of your life. I was 6, and मेरा भाई, मेरी मॉम, मेरे डैड, हम बॉम्बे में रहते थे। We used to travel a lot. My father used to enjoy like driving, Lonavala, Khandala, and making all those memories. So that is when I started talking about that car. And with the car came a lot of emotion. When you're just giving like an impromptu a speech to the casting agent, and I became a little emotional because it involved my father, and you don't really talk about all this a lot to someone on the screen, right? And वो बोलते बोलते बहुत इमोशनल हो गया। एंड देन लाइक उनको रियली वो आई गेस कहानी और मेरी स्टोरी और मेरी कार बहुत यूनिक लगी, क्योंकि वैसी कार उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी। अमेरिकन मीडिया पूछने वाला था कि उन्होंने कभी ऐसी देखी है कि देखी थी? आई वांट टू आस्क दैट।
they have never seen a car like that. In fact, everyone was very shocked. ये कौन सी गाड़ी है? They did a whole research on this. But the interesting part about this entire journey is जो Rutledge Wood है, who is the one of the biggest judges of the show. He's also the host of the show, and he's very prominent figure in the car community in America. He owns a Suzuki. It's not exactly a Maruti van, but he has a Suzuki van as a collector, and he's collectors. He likes collecting cars, and उन्होंने वो Japanese version यूएस में उनके पास है. आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी लाइक अनबिलीवेबल जब मुझे उन्होंने बताया उनके पास वो गाड़ी ऑलरेडी है उनके गराज में. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स प्ले टुगेदर हियर. वैसे आप आई थिंक 10-12 साल जब या आई थिंक 13 इयर्स अगो यू लेफ्ट, राइट? तो उसके बीच में जो सोशल मीडिया में मीम की जो दुनिया है, मीम की दुनिया में मारुति वैन काफी हिट हो गई बाय द वे, अगर आपने फॉलो किया है. बिल्कुल बिल्कुल. जो abductors हैं उनकी काफी हिट हो गई. I actually said that. Okay, I said that on the show. In Bollywood, it's called the kidnapping car. and it's हम लोग का मजाक उड़ाते हैं. और हम लोग बहुत छोटे थे, we would all feel, oh God, हमारे पास मारुति वैन क्यों है? But today, when you walk, you're away from your country, you're away from your people, you're away from your family. Those are the things that we are drawn back to, and we are taken back in time. And sometimes these family cars are such an important piece of any household, right? आप cars का show करते हैं. एक इंसान अपनी जिंदगी कमाई बनाता है इन गाड़ियों को खरीदने के लिए. So I know the pain and like the happiness involved with these cars, right? So yeah, it's Maruti van. It is iconic. बट अब इमोशनल से मैं थोड़ा सा मैकेनिकल साइड में आता हूँ क्वेश्चन में, बिकॉज द मोमेंट आई हर्ड कि आपने इसे मारुति वैन चूज किया है एंड यू वेंट अहेड एंड गॉट इट मॉडिफाइड, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हैव यू बीन मॉडिफाइंग कार्स, और इससे पहले कभी सोचा था कि हाँ मैं कार को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकती हूँ? वहाँ यूएस में तो बहुत जोरदार ट्रेंड है, कल्चर है, बट इंडिया में उतना नहीं है. एंड प्लस मारुति वैन के साथ ये सोचना तो बहुत ही यूनिक था. सो इससे पहले आपका एक्सपीरियंस था क्या? बिल्कुल भी नहीं. सो कंप्लीट कैंडिडेट्स. मुझे अपनी गाड़ी का टायर चेंज करना आता है. आई नो हाउ टू फिल द एयर इन ऑन द टायर्स. आई नो हाउ टू चेंज द लिक्विड, वाइपर फ्लूइड. मुझसे बस ये बेसिक सारे काम जरूर आते हैं. तो अगर मैं स्ट्रैंडेड हूँ कभी भी टेक्सास की रोड्स पे, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. बट बियॉन्ड दैट आई हैव जीरो एक्सपीरियंस इन कार मॉडिफाइंग और एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल वर्क. बट द शोज यूनिकनेस इज कि हॉट व्हील्स अल्टीमेट चैलेंज पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर कंटेस्टेंट के साथ 3 carpoolers हैं who are very good in their field. So I had 3 carpoolers. One is Michael, one is Sam. Michael is from Vegas, Sam is from London, UK, and then Claudia, she's from Miami. तो ये तीनों अपने ही इन लोग, they are artists in their own way. Michael actually has done a lot of work in US Hollywood cars, so he comes from a lot of experience in modifying. Sam was really into the mechanical work. उन्होंने मेरी पूरी गाड़ी पे box body करी पूरा. He was the one with all the tools. And Michael and Claudia is an artist, so she was helping me, making sure कि मेरे जितने ideas है वो उन्हें life पे ला रही थी. So I had a team, and every contestant in this show has that. So basically, I'm the designer, I am the brains behind the car, and they are the executioners, and I could have done nothing without them. So they're very important in this piece. अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बात मैं समझना चाहूंगा, ये मारुति वैन वही थी जो आपकी फैमिली में थी, या एक इंडिया से उन्होंने अलग से मंगवाया? नहीं, ये एक रेप्लिका थी. ऑफ कोर्स मेरी गाड़ी तो गॉड नोस कहाँ है, क्योंकि हम बॉम्बे, वी लेफ्ट बॉम्बे एंड वी वेंट टू बहरेन. मेरे डैड की वहाँ जॉब लगी थी, तो वी हैड सोल्ड ऑफ एवरीथिंग, तो द कार वाज डेफिनेटली गॉन. दे मेड अ रेप्लिका, सो दे कॉन्टेक्टेड मी. उन्होंने मुझसे एग्जैक्ट डिटेल टू डिटेल पूछा आपकी गाड़ी में क्या क्या था. एंड आई डोंट नो इफ यू गेट टू सी इट ऑन द शो, बट मैंने उनको बताया था मेरी गाड़ी में सबसे आगे गणेश थे. एंड लाइक दैट इज लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस. हम सबसे पहले हमारे गणेश जी को बिठाते हैं, एंड दे पुट दैट. तो जब वो गाड़ी आई, उन्होंने एक एग्जैक्ट रेप्लिका बनाई. एंड उन्होंने एक्चुअली उन्होंने गणेश लगाए हुए थे. देयर वाज लाइक अ स्ट्रिंग जो लटक रही थी. एंड देन उन्होंने मेरे कैसेट टेप्स थे, जो से मैंने उनको बताया मेरे डैड को गानों का बहुत शौक था. ही यूज्ड टू लव सिंगिंग. तो वो कैसेट
जी, उन्होंने सारे कसेट हाँ, टेप्स लगाए थे, कसेट प्लेयर था. सो दे मेड श्योर लाइक द नॉस्टैल्जिया कम्स बैक व्हेन यू सी द कार. एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड. इनफैक्ट अभी जितने भी एपिसोड्स आए उसमें हर एपिसोड में कोई ना कोई रोया है अपनी वो गाड़ी देख के, बिकॉज इट टेक्स यू बैक टू दैट टाइम एंड आई क्राइड अ लॉट. So yes, they really did a lot of work to make sure you can bring that car and then transform it. ओके. सो नाउ दैट क्वेश्चन जो मैं पहले पूछने वाला था, बट मैं बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया या वापस चला गया. मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने डिजाइन सोचा या आपने सोचा कि मारुति वैन, उसके बाद उसमें क्या करना है, फर्स्ट थॉट क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू विद दैट कार? जी, so on the show we had a lot of calls regarding आपको क्या गाड़ी आपकी गाड़ी कैसी होगी, like what are your ideas, talk to us, because I'm sure the producers also want to know क्या क्या ये लोग करना चाह रहे हैं. There's a budget for everything, and so I was very crystal clear. मेरी गाड़ी is going to be a homage to my father and my culture, and these are very important part of who I am. So if I'm coming on the show, I want to include that, and then my son is going to watch this show and he has to be proud of who he is. And this is a huge deal on representation, American media mein. And so I knew it has to be some bold, bright, desi colors, and I know Rajasthan से मैं हूँ, वहाँ पे पली बड़ी हूँ अपने कुछ साल जब मैं इंडिया में थी, एंड आई वांटेड टू ब्रिंग दैट एनर्जी इन हमारी इंडियन ट्रांसपोर्टेशन इतनी यूनिक है, एंड आई वांटेड टू ब्रिंग दैट टू द अमेरिकन मीडिया. वो हॉर्न ओके प्लीज, like I wanted to bring that on the car, and it's actually there on the back of my car. I wanted to use Indian upholstery so that I can show like all the colors, and so my thought kind of kept going in that direction. And then yes, we took it from the paper to the actual car. और वो जो एक व्हील सा है मंडला. ओके, दैट्स मंडला. Yes, हम उसके बारे में मंडला बताया है. क्यों सोचा और किस तरह से वो बना? जी, सो मेरे साथ जो क्लॉडिया है वो एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है यहाँ पे, एंड हम लोग डिसाइन कर रहे थे कि हम अपनी गाड़ी में कुछ एक्सक्लूसिव एडिशनल आइटम डालना चाहते हैं. एट द एंड ऑफ द डे दिस कार इज नॉट रोड लीगल, दिस इज अ टॉय, इट्स अ लाइफ साइज हॉट व्हील्स. तो इतनी छोटी सी गाड़ी को आप इतनी बड़ी लाइफ साइज देख रहे हैं, तो इट हैज टू हैव अ लॉट गोइंग ऑन, राइट. एंड ये बच्चों के लिए हम टॉय बना रहे हैं. दैट्स वाज माय ब्रीफ इन माय माइंड, एंड आई वांटेड टू ऐड लाइक अ स्पिनिंग मंडला जो हमने बनाया वहाँ पे शो पे. क्लॉडिया ने बनाया विद शी कट एवरीथिंग फ्रॉम द वुड एंड शी टुक ऑल द डिजाइन एलिमेंट्स दैट आई आस्क्ड हर. कांच लगाना, ये लगाना, वो कलर्स, सो दैट वी कैन शो इट जैसे फिजिट स्पिनर होता है, राइट. आई वांटेड टू इंक्लूड दैट कॉन्सेप्ट on the mandala, so we made it a moving mandala so that बच्चे जब गाड़ी चलाते हैं चिक चिक like and that thing spins, like that was my whole idea. So again culture, again like awareness around the Indian diaspora, Jaipur, all of that. तो जो आप कह रही है कि बच्चे जब चलाएंगे कुछ स्पिनर टाइप का, सो व्हाट यू सेइंग इज कि जब जो जीतेगा उनकी गाड़ियां हॉट व्हील्स प्रॉपर टॉय में, प्रॉपर कार में चेंज करेंगे, राइट? जी, सो ये था, एक हीट थी, हर एपिसोड में एक विनर था. मैं 4th एपिसोड पे हूँ और मैं विनर हूँ, तो आई बेसिकली won $25,000 and I also won the key to the finale. The final, in the finale there are going to be a couple of contestants जो अभी आएगा बहुत जल्दी NBC पे एंड YouTube पे भी आप देख सकते हैं. उस फिनाले में जो जीतेगा उसकी गाड़ी को हॉट व्हील्स में बनाया जाएगा and it will be sold worldwide. So I think that is the biggest legacy someone can leave. I think अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और like it's huge to have like एक ऐसा collaboration जो कहते हैं हम आज में वर्ल्ड के अंदर. So but it's only for the finalists. I mean personally, you're being a snazzy mom, I think your son will be very proud, and even the Maruti fans, I guess. I don't think कि globally उनके पास ऐसा कोई Indian car का model है. I don't think so. I actually tried to ask a couple of people and I've not seen it online. I don't think they've even done ever like an auto rickshaw or a truck or ambassador. And like I'm talking all iconic, things that will bring us back to our childhood.
and no, they haven't. And so I hope one day, or this show, and like I hope like they get to know, and like someone from all of us just keep telling them on their Twitter or Instagram, banao is gaadi ko, yeah, make this car into a Hot Wheels, and I hope one day they do that. फैंटास्टिक। एंड कितने दिनों में बन गया ये? Gee, so this was a week worth of shoot. So, but the first day we start, we get our cars, we are shown our cars and all of that, and then you are introduced with your carpoolers, जो आपकी team है. So you build the bond, आप trust gain करना चाहते हो. You want to tell them that this is my concept, and you have to basically work with these people whom you would have never met, and now you have working as a team, and they have to be sure, like आप जो कह रहे हो, and they're agreeing with it. So that was a long process. So, and the work on car took us a lot of time. So if you see the show and on YouTube or in the videos over here, we actually stretched the car. तो हम अपनी मिनी वैन को मैक्स वैन ले गए. We added another part of another car which was not a Maruti van. It was another Suzuki which was slightly bigger. Then हमारे पास एक twist आया 3-4 दिन बाद in the show, which was like उनकी डियोरा करके हॉट व्हील्स की बहुत ही यूनिक कलेक्टेबल कार है, and उसका upper half missing है. So we were told like you have to incorporate some element of the Diora too in your build. मेरी build का कभी भी ऊपर, like the roof was never supposed to be gone. And so immediately we had to pivot and like do something. And I know that twist is very important. बहुत TV देखा है मैंने. And I was like, I want to make sure कि my twist is my winning, chance here. Yeah, it was a 6-7 day long process to finish this thing. And I should have asked you earlier, but what did you name your car? So, well, honestly, मैं पहले अपनी गाड़ी को बिस्किट बुलाती थी. जब मेरी मारुति वैन थी, मैंने उसे हमेशा बिस्किट बुलाया, just because वो बिस्किटी कलर की लगती थी. And when we were transforming, I remember that. You're talking about that dark brownish color. I mean, is it the same color or it's maybe not like very dark brown. It was like coffee brown. Like जब वो coffee. Yeah. It's a latte color, I would say, but I used to call it a biscuit. And it was very odd color, by the way, Kranti. It was. I remember. I didn't like that color, but I accepted it. But I knew what I wanted to name my car going into this show. It was Jaipur Jewel, to honor, Rajasthan, to honor our culture, and to really bring something different. आप इतनी सारी गाड़ियों के नाम सुनते हो. I was like, I want to add culture to this. So. और अब जो फिनाले होगा उसमें you'll be choosing some color का जी. तो फिनाले में we as of now we have all got a key to the finale. तो जो भी winners हैं अभी, there are going to be 8 winners, and out of 8 winners, there are only going to be a few winners that are going to go into the finale. So that is not yet shared, unfortunately, and I cannot share more, but I will request you all to continue to follow the journey on maybe my Instagram and NBC and Hot Wheels page. They are sharing everything back to back. So yeah, in the finale, some of the contestants are going to go and build new cars from the scratch. So looking forward to it, and I hope कुछ और दिल के करीब जो इंडियन कार्स होते हैं उसको आप अगर फिनाले में यूज कर पाएं. सो हम लोग वेट कर रहे हैं उसका, बट एट द सेम टाइम बेस्ट ऑफ लक एंड रियली प्राउड आप जिस तरीके से इस मारुति वैन को आपने ट्रिब्यूट दिया है, जो मेरे ख्याल से हम में से बहुत सारे लोगों के बचपन की गाड़ी रही है, एंड अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर इतनी हिट रही है. एंड सो गुड लक एंड विल कनेक्ट अगेन. वी आर रूटिंग फॉर यू एंड वी आर कनेक्ट अगेन फिनाले के अच्छे रिजल्ट की खबर के साथ. So best of luck. बिल्कुल. Thank you so much for all your best wishes. I hope I'm keeping my fingers crossed. So super. So thank you Arushi इस पूरे कॉन्वर्सेशन के लिए. टाइम्स ड्राइव के दोस्तों, आप सभी अपने बेस्ट विशेस आई एम श्योर आरुषि को दे ही रहे होंगे, प्लस एट द सेम टाइम आप फॉलो भी कीजिए इनके जर्नी के नेक्स्ट लेवल फिनाले में. उम्मीद है कि इनकी जो कोशिश है वो सक्सेसफुल होगी और इन्हें आप स्नैजी मॉम के तौर पर फॉलो भी कर सकते हैं. बट हम इंतजार कर रहे हैं कि अब अगली गाड़ी कौन सी होगी, ताकि हम बातचीत और बहुत अगर फिजिकली सामने उस गाड़ी को देख पाए तो फिर और भी मजा आए.
So let's see. Thank you so much. Thanks, Arushi. Thanks for watching. Bye bye. Thanks so much. Thank you so much, Kranti. Appreciate you so much.